Mayam Kurumzari, welcome to Kanglaipak Online Education YouTube channel. Today in this video we will discuss about Unit 1 India Resources and their Development Part 1 Types of Resources. Haibudi hariba Unit 1 asi chapter yam chawu maramna video coverage asi parts magi tongan parts oina khaidok charake ngasi ahan balokot chariba parts asi da ahan ba part 1 Types of Resources. First, let us discuss what is resources. Resources kadai bu kaubuke haibu to hana khanasi. Resources are everything available in our environment which can be used to satisfy our need. Aikhoigi nongmagi sang daba yadraba pot lamsing environment ta fangliba khudimak asibu resources kawi. For example, house aikoina lainaba yum sabada haiba machal kayama changi. Example oina hairada woods, bricks, cement asina singba sing changi hariba polam sing asi environment ta fangi hariba aikoina sizinariba environment ta fangliba polam sing asibu resources haraga khangnai. Now let us discuss about different types of resources. Resources are of different types. Resources makal makha kaya lai. Ahanbada, based on origin, resources can be classified as natural and human resources. Hauraphamgi matung inna resources asi aikoina makal ani thokna khaidokpa yai. Ahamada natural resources amadi ani subada human resources. Natural resources hairagadi aikoigi nature prakriti da phangliba punamak asibu natural resources hairaga khangnai. Natural resources asida amuk ani thona khaidoi ahanbada biotic amadi abiotic resources haina khaidoi. Biotic resources haibadi thawai panba jibasing asibuni. Example oina harabada trees haibadi uwa lairibasing amasung wildlife haidi sa uchek lairibasing asi biotic thawai panba moi sing asi biotic resources ki manung chali. Aduga ani suba natural resources adudi abiotic resources haibadi thawai pandaba non living things. Example oina harabada petroleum, soil, air, water, sunlight, rocks asina chingba. Sing asipuna abiotic natural resources haira khangnai. Mathangda human resources. Human resources haibadi aikoi miyoi babu khangnai. Aikoi miyoi bana lairik tamduna natragana training kaya chattuna aikoi isa gi oiba skill kaya ama tansilli haiba skill sing aikoi tansilliruba skill sing adubu hiram kaya da sijanai haibadi miyoiba samaj ki chaukhatnaba natragana kananaba hiram kaya ama da sijanai. Example khudam oina hairabada a carpenter haibadi usuba mi amana make our furniture items akoigi yum da sijanariba furniture items sing usuba mi amana sai hairama gi tamjanjariba skill usuduna haibadi tongan ba u gi polam sing saduna tamsalluriba skill aduna aikoi gi changdaba yadraba nongmada upu kangthol asina chingba sing furniture items sing saduna aikoi da kanaba mayam pi aduna. As an example, carpenter is also a resources. It's a kind of human resource. Another example is that teacher teach us to gain knowledge, doctor treat us when we are sick. Haibadi hairiba skill lairaba tongan ba hiram da skill lairaba miyoi sing asibu aikoina they all are example of human resources. Next type of resources adudi based on exhaustibility. Resources are classified into renewable and non-renewable resources. Loi khiba yaba natraga sungloi loidaba asi da base tawduna aikoina resources asi ani thona khaidoi amadudi renewable resources amadi non-renewable resources. First, renewable resources. Renewable resources are those resources which can be renewed or produced by physical, chemical and mechanical process. Renewable resources haibadi physical, chemical amadi mechanical process na chingba sing sizinaduna amuk hanna sungdokpa yaba resources adubu renewable resources haira khangnai. Example oina hairabada solar energy, wind, water, etc. Solar energy asi aikoina numit ki mateng dagi haibdi numit ki mangal gi mateng lauduna amuk hanna sungdokpa yai. Like this, renewable resources never exhausted. Haibdi renewable resources asi loiba sungnai naide aikoina prakriti na sungnai naide na aikoida piba lan namani. Next,
Non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources which cannot be renewed once if it is exhausted. Non-renewable resources haibadi once amukpu loikrabadi amuk hanna aikoina sungdokpa natragana semba saba yadaba resources adubu non-renewable resources haira khangnai. Example, metallic minerals haidi dhatu gi polam sing samna hairabada iron, yod, gold, sana, silver asina chingba sing asi non-metallic minerals sing like coal, petroleum, natural gas, etc. Haiba sing non-metallic minerals sing asisu non-renewable haibadi sungdokpa yadaba resources ta ching challi. Example oina hairabada hariba mineral sing asibu once amuktang sizinnakrabadi amuk hanna sungdokpa yade. Let's say all the petroleum is exhausted from our earth. Prithivida petroleum gi oiba potok sing asi pungloi loikhre akhoi gi prithvi gi laimai gi manungda lairiba petroleum reserve asi pungloi loikhre haina khalasi adu oirabadi adu oiba taragadi aikoina petroleum asi amuk hanna semba natraga sungdokpa ngamde. Asumna hairiba resources sing asibu haibadi amuhana koina sungdokpa semba yadaba amuhana renew toba yadaba resources sing asibu non renewable resources haira khangnai. Mathangi type of resources adudi based on ownership. Haibadi ownership mapugi matung ina resources si aikoina makhagi makhal sing asi oina khaidokpa yai. Number 1, individual resources haibadi mi amagi resources. Example, house akhoi isagi yum, plot akhoi isa yum saraba akhoi ginkol, farmland haibadi akhoi gi lau singu be mafam, pond haibadi pukri haibadi asina chingba sing asi akhoi gi individual resources ki manung challi. Next, community resources. Community resources are not owned by a single person. Mi ama kaktana mapu oidaba resources miyam gi oiba resources adubu community resources thaina khangnai. Example loina hairabada public ground akhoi miyam gi oiba ground haibadi lampak lairiba, community hall akhoi miyam gi oiba community hall, public parks akhoi gi park lairiba sing hariba sing asibu akhoi community resources ki manung chali. Next, national resources. National resources are those resources which belongs to a nation. Country natraga laipak amagi resources ki manung chanba adubu national resources haina khangnai. Example, forest haibadi umang, wildlife haibadi sa uchek, river, turen asina chingba sing asibu national resources haira khangnai. International resources are those resources which cannot be used without the concurrence of international institutions. International institutions singi ayaba yaudana sijinnaba yadaba resources sing adubu international resources kawi. Example oina hairabada akhoi mahasagar samudra achauba oceanic resources hariba resources sing asi akhoi international gi oina akhoi leibak पृथ्वीदा लैरिबा कंट्री मैम सिंगी ओइना कॉमन ओइबा रिसोर्सेस नि अदुना मसिबु इंटरनेशनल रिसोर्सेस हायर खंगनै. नेक्स्ट, based on the status of development अखोई चौखट थौरांगी द बेस तौदुना resources can be classified into potential, developed, stock and reserves. अखोई हारिबा चौखटपा असिदा बेस तौना resources असि मखल मखा क्या थोना खाइदोई अहामबदा potential resources. Potential resources are those resources found in a region but have not been put to proper utilization. For example, potential resources haibadi akhoi iramdam sidadi marang kainaba adubu resources adubu sungdoktuna phajana utilize tauba haibadi sijinnanabagi mawong the same sabadi oidaba adubu ki thakti oidaba resources adubu potential resources kawi. For example, in Manipur and other northern states of India has enormous potential for hydroelectricity but not yet developed properly. Haibadi Manipur yauraga atopa northeastern states singda hydroelectricity puthokchanaba adugi potential haibadi capacity to lay adubu masigi electric hydroelectricity haidi singdagi
इसिंगदगी मई सुंगबा इलेक्ट्रिसिटी सुंगबगी प्रोसेस असी अखोगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सिंग असीदा फजना डेवलप तौदब मरमना अखोगी रिसोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पुथोकपगी पोटेंशियल नत्रगा रिसोर्सेस असी लेरगसु हौजिक फावबा लई हाइना खंगसु सिनबा ओइद्री हाइबदि वे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन दिस फील्ड नेक्स्ट developed resources. Developed resources are those resources which have been surveyed and determined by their quality and quantity for utilization, but their development depends on their technology and level of their feasibility. हाइबदी developed resources हायरगदी अखोइना फजना सर्वे तौरबा नत्रगना मखोय असि कयाम फंगी मखोय क्वालिटी कयाम लई मखोय क्वांटिटी हाइबा अखोय जगह मफम असिदा कयाम न फंगी क्वांटिटी कयाम न फंगी नत्रग क्वालिटी कयाम लेबा पोनो हाइबा खंगतोकलबा पूरा खंगतोकलबा सिजनबा याय नत्रग कयाम क्वांटिटी कयाम लई क्वालिटी कयाम लेबा पोनो हाइ खंगतोकलबा रिसोर्सेस सिंग असिबु developed resources kawi, but their development depends on their technology and level of feasibility. हाइबदी मखोय सिंग असिबु फजना सुंगदोक्तुना मयामदा यूटिलाइज तौबगी सिजनहनबगी मओंग असिदी टेक्नोलॉजी दा डिपेंड तौबा हाइबदी एग्जांपल लेट्स से आयरन ओर हाइरिबा रिसोर्सेस सिंग असि अखोय मणिपुर दा फंगे हाइना खलसी हाइरिबा आयरन ओर सि लैरेना खंगागा मखोय जी सुंगदोकनबा फैक्टरी आयरन ओर जी सुंगदोकनबा फैक्टरी अमम लई हाइबदी आयरन एंड स्टील प्लांट अखोय जमशेदपुर दगा लैरिबा आयरन एंड स्टील प्लांट हाइरिबा स्टील प्लांट सिंग असे अखोय लैबाक सिदा लैतबा तारगदी आयरन ओर हाइबसी मिनरल हाइबसी फंगे हाइना खलगसु टेक्नोलॉजी लैतबा मदमना अखोय लमदम सिदा सुंगदोकपा नत्र सिनबा यादबा सिगुंबा रिसोर्सेस हाइबदी खंग लैरे हारा खंगगसु अखोय टेक्नोलॉजी वाटना सुंगदोक्तबा रिसोर्सेस सुंगदोक्तना लैब्री रिसोर्सेस सिंग असिबु डेवलप्ड रिसोर्सेस हारा खंगनै नेक्स्ट स्टॉक रिसोर्सेस are those resources which are abundantly found in nature but don't know how to extract and use it due to lack of technology. अखोई technology लैतबना हाइबा resources सिंग असि फजना अखोई प्रकृति ना अखोई नेचर दा अखोई environment दा फजना फंगे आइना खंगगसु मदुबु सुंगतोकनबा अखोई दा knowledge human knowledge लैतबा अखोई द टेक्नोलॉजी लैतबा खुजुगुलाई लैतबा मरमना सुंगदोकपा यादना लैबा रिसोर्सेस फजना दी अखोई की सराउंडिंग द फजना दी लैजबा रिसोर्सेस सिंग असिबु स्टॉक रिसोर्सेस कावी एग्जांपल ओइना हाइबदा हाइड्रोजन इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर एंड वी नो दैट इट कैन बी यूज्ड एज fuel but we don't know how to extract hydrogen from atmosphere to use it. अखोइना हाइड्रोजन असि अखोई की नुसित की कुयोमदा हाइबदे अखोई एटमॉस्फेयर दा फजना मरांग काइना फंगे हाइबसि खंगी अदुबु हाइड्रोजन अदुगी सुमथक्ता हाइड्रोजन सि अखोइना हाइड्रोजन हारिबा गैस असिदगी अखोइन तोंगान तोंगान हिरमदा कानाबा याबा हिरमदा सिजनबा याय हाइड्रोजन हारिबा गैस असिदगी अखोइना थाव ओइना फ्यूल ओइना सिजनबा याय पेट्रोल की महुता अदुबु अखोइन मसी खंगना खंगना अखोई हाइड्रोजन असि एटमॉस्फेयर दगी सुंदोकपा ngamde हाइबदि अखोइदा अदुगी ह्यूमन नॉलेज लैते हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड हाउ टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हाइबदि टेक्नोलॉजी लैतबना ह्यूमन नॉलेज लैतबना अखोइगी हारिबा रिसोर्सेस सिंग असि फजना एबंडेंटली एटमॉस्फेयर द नत्र एनवायरनमेंट ता फंगदुनसु सिजनबा एक्सट्रैक्ट तौबा यादबा सिबु अखो हारिबा रिसोर्सेस सिंग फजना फंगलिबा रिसोर्सेस सिंग असिबु स्टॉक रिसोर्सेस हारे खंगनै and last here reserve resources are those resources which can be developed and exploited properly by using proper technology and kept it for future use हाइबदि reserve resources हाइबदि अखोइना हुजी फंगिगा फजना अखोइना तुंगसिल लगा रिजर्व ओइना थंबा एग्जांपल लेट्स से अखोइ वाटर रिजर्वर इन डैम्स अखोइना दाम सादुना इसिंग जे फजना तुंखतुना अखोइ इसिंग जे फजना ngakchal तुंखतलागा अखोइना इसिंग जे कलेक्ट तौरगा दाम दुदा थम्मी थमगा अखोइना हिरम के आदा वाटर सप्लाई सिंग आइबदि अखोइ युंगी सिजनबा डे टू डे यूज वाटर द सिजनै नत्रगा ड्रिंकिंग वाटर द फंक्शनै अदुगा अखोइ एग्रीकल्चर हाइबदि इरिगेशन सिस्टम सिंग दा अखोइ इसिंग जे थादुना अखोइ हारिबा इसिंग असि फजना सिजनै अमजु फ्यूचर यूज अखोइ तुंगदा लाकदोरिबा सिंग सिगी ओइनासु सिजननबा अखोइ फजना स्टॉक तौरगा रिजर्व तौरगा थम्मी
हाइरिबा अदुदी हाइरिबा वाटर रिजर्वर डैम द रिजर्व तौदुना हाइबदी collect tawduna lairiba water sing asisu reserve resources ki manung chali. Another example of reserve resources is also forest reserve forest ko reserve forest haibadi koi mayam na khangna duna laire reserve forest area koi di forest department na protect tawduna masidai na masi box reserve forest ni. Let's say example Langol reserve forest hariba sida koi na kanamata na चंगदुनो उवा यानबा नत्रगना मदुदा उवा कोकथोक्तना लामै थादन तौबा अमता यादे हारिबा रिजर्व ओइना प्रोटेक्ट गवर्नमेंट ना प्रोटेक्ट तौदुना थमख्रबा रिजर्व फॉरेस्ट इज also an example of reserved resources. So that's it for today. Mayam boroi bahna mukan kurumjari. Thank you for watching this video. Please like, comment and share, and please subscribe my channel Kanglaipak Online Education.